So in today's video, we are going to tell about किसी एथलीट को क्या करना चाहिए इस करंट सिचुएशन में जैसे कोविड-19 एंड क्या रहेंगे उसके लिए बेस्ट आइडिया. सो हम स्टार्ट करें जस्ट नाउ. सो हेलो गाइस, मैं हूं सिड, आपका होस्ट एंड दोस्त. आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे सिड स्पोर्ट्स पर. सो इफ यू वांट to know what an athlete should do and suggestion from a physiotherapist, this video is for you. So if you like the sports content, you want to watch interviews of people, like discussion with people, you have some queries or sports related drills, anything, this channel is for you. So please hit the subscribe button and the bell icon and share with your friend. So let's get started. So hello everyone, now we are with the sports person Shrikant Iyenger, who has been part of Indian hockey team, and he has in his career he has been to two Olympic in Rio and in London. So let's get started. So hello sir. Hi, good afternoon. Good afternoon. So हम हमेशा ऐसे सेशन रखते हैं, so we wanted to know about your experience. So first of all, tell me about yourself. Yeah, so Sid, first of all, thank you so much for having me here. It's definitely a matter of pleasure for me to be able to come and talk to you, and probably through your channel, I would like to say hello to everybody else who's listening and watching. I've been a sports physiotherapist for past 16 years. And in the span of 16 years, 10 years, I was part of national men's hockey team. I was in last 2 years of that career, I was as I was working as a high performance, as a chief physiotherapist of the National Hockey Federation. And I've been to two Olympic Games, which you've already said, 2012, 2016. And I've been also lucky to be a part of World Cup championships with the national hockey team, as well as Commonwealth Games and Asian Games. I come from small town called Raipur. Now it's the capital of the state of Chhattisgarh. I've done my basic graduation from Bangalore and my master's from University of Curtin from Western Australia in Australia. So that is very basically about me. At the moment, I am a clinical director of a physiotherapy clinic, which is based in Delhi. The name of the clinic is Pro Health Asia Physiotherapy and Rehabilitation Center. So as we know, आपने जैसे बताया कि like you have been the part of Indian hockey team. So how was your experience there, and what would you like to share with us? मतलब से जब किसी भी लाइफ में आप नेशनल टीम के लिए जब किसी भी तरीके से आप अगर जुड़ते हो तो ये बहुत बड़ा आपके लिए एक सम्मान का भी बात होता है और एक बहुत ही बड़ा आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होता है. सो आई थिंक फॉर मी व्हेन आई वाज स्टडीइंग फिजियोथेरेपी द ओनली गोल आई हैड वाज टू रिप्रेजेंट माय कंट्री as a national team physiotherapist. I can't still tell you जब पहली बार मेरे को इंडिया का जर्सी मिला था, and I still keep it very close to my heart, and I think it was very very special feeling. Some of the best experiences of my life have come working with the team. जैसे मैंने बताया, have really had a privilege to go to two Olympic Games, some of the best Commonwealth Games in 2010 World Championship. So the whole experience was very very rich, enriching personally as well as professionally. I think I grew a lot as a person, but also my understanding of sports sciences and sports physiotherapy grew a lot. सबसे अच्छा फैक्टर ये होता है कि जब आप एक टीम एनवायरनमेंट में काम करते हो तो आपको अपने डोमेन के साथ साथ बाकी लोगों के साथ काम करना अच्छे से आने लगता है. सो यू हैव टू स्टार्ट एसोसिएटिंग योर वर्क विद द कोचेस, with the players, and as well as the rest of the support staff like strength and conditioning coaches, masseurs, nutritionists, psychologists. तो आपको एक अपने काम के साथ साथ आप दूसरों के जो एक्सपर्टीज है उसको कोलैबोरेट करके अपने काम का बेस्ट निकालना आपको वो एक एनवायरनमेंट में मिलता है. So I think it was overall a fantastic experience for me. So जैसा आपने शेयर किया like the players which are currently playing or like when आप जब आप पार्ट थे टीम के इंडियन हॉकी टीम के, so उनके क्या माइंडसेट रहते हैं, they follow any pre-game rituals like doing something? Yeah, so एक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई भी एथलीट अगर नेशनल टीम तक पहुंचता है तो उसका मोटिवेशन लेवल बहुत हाई होता है नेचुरली. मतलब यू कांट बी नॉट मोटिवेटेड एंड प्ले फॉर योर कंट्री. तो हमारे लिए एक लकी पार्ट नेशनल टीम्स को मैनेज करने का ये हो जाता है कि प्लेयर एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राइंड से निकला होता है. उसको वो लेवल ऑफ कंपटीशन स्कूल में, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल से सब कंपटीशन फेस करके वो वहाँ आता है. तो उनका टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग जितना स्ट्रांग होता है उतना ही अपना सेल्फ अवेयरनेस भी उतना स्ट्रांग होते जाता है. अब डिफरेंसेस आता है जूनियर और सीनियर प्लेयर पे. जब पहली बार आप नए एनवायरनमेंट में आते हैं तो कुछ जूनियर प्लेयर्स को कंफर्ट लेवल चाहिए रहता है. दे आर लिटिल बिट मोर टेंस्ड, दे आर लिटिल बिट मोर
थोड़ा सा उनको वो एनवायरनमेंट कंफर्टेबल बनाना पड़ता है उनके लिए। मेरे सीनियर प्लेयर्स ऐसे हैं जो पिछले 10 साल से खेल रहे हैं, उनको ये चीज़ बहुत आराम से करते 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 वो कंडीशन हो जाते हैं। तो सबसे यूनिक फैक्टर एज अ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट और एज अ स्पोर्ट्स ट्रेनर or any coach who's working with the team, the most challenging part and the most unique part is to be, आप एक टीम एनवायरनमेंट में होते हुए भी आपको हर एक प्लेयर को इंडिविजुअली हैंडल करना आना चाहिए, एंड दैट्स द बिगेस्ट ट्रेडमार्क ऑफ इट। सो जैसे अब हॉकी में गोलकीपर्स होते हैं, उनका रूटीन अलग होगा, फॉरवर्ड प्लेयर्स है उनका मेंटालिटी अलग होता है, फॉरवर्ड डिफेंडर्स एंड सेंट्रल मिडफील्डर्स उनका अलग होता है। सो फैक्टर्स ये है कि बेसिकली आप एक टीम एनवायरनमेंट में ब्रेकफास्ट टाइम, लंच टाइम, डिनर टाइम, ये सबका सेम होता है, बट डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट आपका डाइट थोड़ा अलग होता है। सम जैसे गोलकीपर्स थे, वो उनको मॉर्निंग में जाके थोड़ा आधा घंटा पिच में जाके ट्रेनिंग करना ताकि उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन शार्प रहे, उनसे उनको फायदा मिलता है। कुछ अटैकर्स जो होते हैं जिनका रिक्वायरमेंट रनिंग का ज्यादा होता है, तो वो लोग मॉर्निंग में जिम में जाके ट्रेडमिल में हाई स्पीड, हाई इंटेंसिटी, 1 या 2 सेट का क्विक हाई इंटेंसिटी इंटरमिटेंट ट्रेनिंग करते हैं। और कुछ डिफेंडर्स जिनको थोड़ा सा जो शॉर्ट ड्रैग फ्लिकर्स हैं, और जो डिफेंडर्स है जिनका काम थोड़ा सा स्ट्रांग होने का है, तो दे लाइक कपल ऑफ क्विक रिपीटेशन ऑफ लाइट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इन द मॉर्निंग। तो ऐसा यूनिक एनवायरनमेंट होता है। What we try to do is we try to make it consistent as much as possible for the group, ताकि हम मैच टाइमिंग से रिवर्स ऑर्डर में अपना शेड्यूल बनाते थे कि अगर आपको मैच के 1 घंटे पहले स्टेडियम पहुंचना है या 1.5 घंटा पहले स्टेडियम पहुंचना है, आपका ट्रैवल टाइम उसके हिसाब से, फिर आपका लंच टाइम उसके हिसाब से, आपका टीम मीटिंग उसके हिसाब से, आपका मॉर्निंग शेड्यूल। तो ऐसा एक स्ट्रक्चर हम उनको देते हैं, उस स्ट्रक्चर में जो जो उनको अपने हिसाब से मैनेज करना है, फिर हम उनके लिए स्पेसिफिकली केटर करते हैं। सो दैट्स हाउ अ होल टीम शेड्यूल इज मेड in a team environment. Okay, so like this year we like हमने बहुत सारा समर सीजन मिस कर दिया जहाँ स्पोर्ट्स होता है बेसिकली बहुत ज़्यादा। सो एक समर जैसे सीजन में जब बहुत ज़्यादा हीट होता है, तो आप एक प्लेयर को कंडीशनिंग रखने के लिए नेक्स्ट सीजन के लिए क्या सजेशन देंगे? तो अभी के लिए जिस समय हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, तो दुनिया के लिए एक बहुत चैलेंजिंग टाइम है। अभी हम कोरोना 19 के साथ, मतलब उसका वायरस के साथ जितना भी डिफिकल्टी है उसको फेस कर रहे हैं, और इन समस्याओं के साथ रहते हुए हमको बहुत सारे लाइफ में जो चेंजेस करना है वो करना पड़ रहा है अभी। तो ये खाली एथलीट्स के लिए ही डिफिकल्ट नहीं है, ये हम सबके लिए डिफिकल्ट है कि हम शायद अपने अपने घर में लॉकडाउन है, हमारा लाइफ अफेक्ट हुआ है, हमारा काम अफेक्ट हुआ है, हमारा जनरल डे टू डे पैटर्न करने का काम बदल गया है। बट बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि जैसा अभी आप और मैं एक रिमोट चैनल के थ्रू बात कर सकते हैं, तो टेक्नोलॉजी के कारण बहुत सारा चीज इम्प्रोवाइज भी हुआ है। तो अगर मैं वापस एथलीट के लाइफ में अगर आऊं, तो जो एक एथलीट दिन में 6 से 8 घंटा प्रैक्टिस करता था या करती थी, अब सडनली उनको घर के एनवायरनमेंट में डाल दिया है, तो ये किसी के लिए भी चैलेंजिंग हो सकता है, खाली फिजिकली नहीं बट मेंटली भी। बट उसका एक ही फैक्टर सबसे पहले ये एक्सेप्टेंस है। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये सिचुएशन है, राइट, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट दैट वी कांट डू मच अबाउट इट, बिकॉज दुनिया में हर कोई इससे सफर कर रहा है। तो अभी क्रिकेट कहीं नहीं हो रहा है, अभी ओलंपिक गेम्स इस साल नहीं हो रहा है, तो इस साल कोई भी एथलीट अभी कहीं नहीं खेल रहा। तो ये इस बात को समझना पड़ेगा कि यू आर नॉट द ओनली वन हु इज मिसिंग आउट ऑन समथिंग। आप ही अकेले नहीं है जो कुछ मिस आउट कर रहे हैं, बट यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट yes, within that domain what all things I can do now. So जैसा आपने बताया कि इस समय समर में क्रिकेट बहुत होता था, अगर अभी सीजन आप मिस कर रहे हैं तो what do you do? So I personally, with all the athletes which I'm working, I make sure to be remain connected with them through either phone calls, through messages, or through emails. All right, now it starts by putting structure to their life. So how we do it, it starts first of all by making them like very very well tuned with forming a good routine for themselves. So athlete ka life sab kuch structure pe base rehta hai, right? So you should not, there's no reason for you to change that pattern now. तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 10 बजे बेड में जाते थे, so you don't change it completely. So if not 10, by 10:30 or by 11 maximum, I expect my athlete to be in the bed. Likewise, if you are getting up in the morning 6 बजे उठ के अगर आपका कुछ ट्रेनिंग का रूटीन था, तो उस पर स्टिक करिए। अब मे बी आप रूटीन ट्रेनिंग घर में नहीं, आप ग्राउंड में नहीं जा सकते, बट यू कैन डू इट एट योर होम। सो जो आपके पास जो सामान है, इट कुड बी चेयर, टेबल, इट कुड बी सिंपल बैंड्स, इट कुड बी छोटा छोटा वेट, नहीं तो भी वाटर बॉटल में भर के उसको वेट को इम्प्रोवाइज करते हुए, हम जो आपके घर में रहते हुए जो चीज टेक्निक है, हम उसको फॉलो करते हुए वी कैन क्रिएट अ प्लान फॉर यू।
So then I give them a plan through email or through by videos of a software driven protocols which I keep sending it to them. और ये मैं उनसे फिर ये फीडबैक लेते रहता हूँ कि बाय एंड ऑफ द डे उन्होंने क्या क्या किया है, राइट. उसमें फिर ये भी मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ कि वो क्या खा रहे हैं. नाउ वी आर, अभी ये बात समझना पड़ेगा कि हंगर और क्रेविंग में डिफरेंसेस है. मतलब आपको जब हंगर आता है वो बॉडी का फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है खाना खाने का, राइट. जो हंगर जो है वो बॉडी का बेसिक फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है. जब भूख लगी है तो खाना खाना है एनर्जी रिसोर्सेज के लिए. क्रेविंग जो है वो ग्रीड है. क्रेविंग आपके मन का लालच है कि पेट भरने के बाद भी यू फील लाइक ईटिंग समथिंग. सो उस सिचुएशन में ही यू एंड अप पुटिंग वेट एंड यू एंड अप ईटिंग थिंग्स व्हिच आर नॉट गुड फॉर यू. सो सबसे पहले जैसे मैंने बताया रूटीन होना जरूरी है. आपका स्लीप साइकिल होना जरूरी है. मिनिमम 8 आवर्स एज एन एथलीट यू हैव टू स्लीप. एंड जितना हो सके खाने को स्टिक करिए आपके डाइट के हिसाब से. अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा कम भी लीजिए. जो अपने आप नॉर्मल ट्रेनिंग के टाइम में जो डाइट लेते हैं उससे भी कम लेंगे तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपका आउटपुट जो अभी फिजिकल आउटपुट है काम करने का वो उतना नहीं है. जितना हो सके प्रोसेस फूड को अवॉइड करिए और शुगर को अवॉइड करिए. घर का बना हुआ लोकल और सीजनल जो अभी के वेदर में सब्जी और खाना जो फ्रूट मिल रहा है उसको खाइए. ओके. और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंटली गिव टाइम फॉर योरसेल्फ. तो खाली दिन भर बैठ के व्हाट्सएप में बेमतलब का वीडियो देखना या वीडियो गेम खेलना या अननेसेसरी वीडियोस देखने के बजाय अपने टेक्निकलिटीज पे काम करिए. थिंक अबाउट ऑल द टैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ योर गेम. मेंटल विजुअलाइजेशन करिए. थोड़ा सा समय मेडिटेशन के लिए दीजिए. सो ट्राई टू गेट इनटू द जोन वेयर आप अगर फिजिकली बाहर नहीं खेल रहे हैं तो विजुअलाइज ऑल दैट विद इन योर ब्रेन. और एटलीस्ट शैडो प्रैक्टिस आप खुद से कर सकते हैं, उसको मत छोड़िए. So that's how you structure a training program. जब अगर एक this holds good for off season also. जब athlete अपने घर जाता है, so this is how we help them. But सबसे importantly coaches के लिए, physios के लिए, trainers के लिए important factor ये है कि उनको उन athlete को अपने भरोसे नहीं छोड़ देना है. You have to, आज के day and age में technology is very very strongly valid and we have to utilize that for our benefit. तो इसका मतलब ये है कि remain connected to them. उनके लिए जो सूट करता है, चाहे वो ईमेल हो, चाहे वो व्हाट्सएप का वीडियो हो, चाहे वो फोन कॉल हो, ट्राई टू सूट टू देयर रिक्वायरमेंट एंड देन गिव देम स्ट्रेटजीज टू मैनेज देमसेल्व्स लाइक हाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड. And don't just stick yourself towards training. Think about all the parameters like sleep, like recovery, like food, like training possibilities कि उनके घर में क्या क्या सामान है, उस चीज को रखते हुए रियलिस्टिकली एग्जामिन करें. And last bit is to constantly motivate your athlete to think about positives of life. Think about things which are controllable variables. तो अगर जो मेरे हाथ में नहीं है उसके बारे में बहुत समय सोच के या बहुत समय बात करके I will not find any value. So then guide them, guide their thought process, guide their resources within their system. कि utilize this time to start doing more reading, start doing more technical corrections, start becoming more fitter. There is no reason for you to go out and do small shuttle runs of 20 meters, maybe hundreds of them, right? So your coach can help you to decide. So this is how to answer your question in a bigger way. If I can just put it across, make the possible resources and get the best out of whatever you have got in your own discipline in your own household. That's how the way you manage an athlete who's going through a off season or a special situation like COVID-19 right now. Okay. Okay. So my next question is what are the things in a team could work on the thing which they are already aware of? There is not one team in the world, be it Barcelona football team, be it Australian cricket team, be it Roger Federer as an athlete. There's no one athlete or no one team which cannot improve. So till the last day you are active as an athlete, there is always room for improvement, right? Okay. That means you don't end up winning all the World Cups you play. You don't end up winning all the Grand Slams you play. That means there is still room to improve. So when I say that, that means every single possibility of one person's life or one person's domain of an athletic life has got room to improvement.
So what you need to do is, what we as physios or we as sports scientists we end up doing is, अब हम उस फैक्टर से दूर हट गए कि जहाँ पे सब के सब एक जेनरिक प्रोग्राम नहीं फॉलो करते. We are starting to follow a very strong understanding of unique requirement of one particular athlete, even if it's in a team environment. तो अगर हम एग्जांपल क्रिकेट टीम का लेंगे, तो क्रिकेट टीम के अंदर एक बैट्समैन होगा, ठीक है, एक बॉलर होगा, एक बॉलर में फास्ट बॉलर होगा, एक स्पिन बॉलर होगा, ठीक है, एक विकेट कीपर भी होगा, एक फील्ड स्पेसिफिक फील्डर भी होगा, कोई स्लिप का स्पेशलिस्ट होगा, कोई डीप फील्ड का स्पेशलिस्ट होगा. तो ऐसा करते करते यू मेक सब टाइप एंड सब पैटर्न, राइट, एंड बेस्ड अपॉन दैट, चाहे वो टेक्निकल बैट्समैन है या probably he is more aggressive power hitter, or he is a smart spin bowler who believes a lot in his spin and the guile, as compared to somebody who's a fast bowler who's believing a lot into his thrust and into his rhythm of fast bowling and bowling fast. So all of that parameters will be differing in terms of training them individually, right? तो इसका मतलब ये है कि आपको उस एथलीट के पैरामीटर में स्ट्रेंथ कंपोनेंट कितना है, स्पीड कंपोनेंट कितना है, एंड्योरेंस कंपोनेंट कितना है, उनका टेक्निकल एबिलिटीज कैसा है और कैसा होना चाहिए, देन उनका खुद का पॉजिटिव आउटलुक है कि नेगेटिव आउटलुक है, कि कॉन्स्टेंटली उनको रीअश्योर करना पड़ता है, या वो खुद बहुत कॉन्फिडेंट है अपने बारे में और सब कुछ जानते हैं. तो ये सब पैरामीटर पे डिसाइड करके यू काइंड ऑफ डिवाइज अ प्लान विच कैन हेल्प एन एथलीट टू बिकम बेटर. और फिर आ जाता है क्वेश्चन ऑफ योर हैबिट्स इन लाइफ. दैट मीन्स हाउ गुड यू टेक केयर ऑफ योर बॉडी, how good you take care of your sleeping hygiene, how good you take care of your food habits, how good you take care of recovery habits. And then most importantly for me is the respect what an athlete carries towards what a coach is saying or what a trainer is saying or what a physio is saying. So ये सब पैरामीटर में professionally as well as individually, personally आप उस पर काम कर सकते हैं. तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि I think a sportsman life is it's a life of an education which can continue till the last day of your life. राइट, दैट मीन्स आप हमेशा एक स्टूडेंट रहते हैं आप उसके उस पर्टिकुलर स्पोर्ट के लिए. एंड आई थिंक द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड आर द वंस हु कैन अडैप्ट, हु कंटिन्यू टू कीप लर्निंग, राइट, एंड दे कंटिन्यू टू कीप in reforming whatever they're doing, because they know that they don't want somebody else to get better of them. So वो constantly learn करते हैं और improvise करते हैं. So again, if I take an example of cricket, पहले T20, पहले टेस्ट क्रिकेट था, टेस्ट क्रिकेट से इम्प्रोवाइज होकर गेम वनडे में आया. तो कुछ टेस्ट प्लेयर्स जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स थे, उनको अपना गेम को बदलना पड़ा वनडे फॉर्मेट्स के लिए. वनडे से जब इम्प्रूव करते करते T20 फॉर्मेट आ गया. So now all the 360-degree shots, maybe T20 के पहले आप 20 साल पहले वो सब सोच भी नहीं सकते थे, वो सब shots आज practically हो रहा है, right? So that's how you continue to improvise based upon what is the requirement of the game, what is the requirement of that particular situation of like a tournament, and what is the requirement of a bowler. So for example, एक normal test series को जैसे अप्रोच करोगे आप, और एक नॉर्मल ओलंपिक गेम्स को आप अप्रोच करोगे, उसमें एथलीट का माइंड सेटअप और उसका फिजिकल पैरामीटर कंप्लीटली डिफरेंट रहेगा. So that's how you create a plan for an athlete to continue to keep getting better. But I'll come back to my point one. There's not one player in the world or not one team in the world which cannot be better, which can continue to keep getting better, and all of them needs to be coached and needs to be helped. So great players, they know what they are, who they are. So somebody like Lionel Messi is extraordinary, but you just need to create a structure around Lionel Messi for that everybody else in the team can continue to play in the manner that how a team should function, right? Yeah. Okay. So last, like not the last, but the question is like how you prefer to improve skill of a athlete or a player? Look, my job revolves not much into technical aspect because I'm not a coach. But what happens is, yes, you're right that there are certain times. So if I keep you example that agar biomechanically somebody is not as strong enough to kick a football, or let's say to hit a ball of hockey, right? And if it's his physical parameters are not permitting him to do that, एंड अगर मेरे को कोच इन्फॉर्म कर रहे हैं कि प्रॉब्ली ये बॉल इसलिए ये शॉट नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज उनका एक सर्टेन पार्ट ऑफ द बॉडी इज वीक,
So based upon the suggestion of the coach and the athlete, we create a program to improvise that particular muscle pattern which creates that movement in the end to create that shot, right? So that's how we go into it. But I directly would not go on to any player and talk about technicalities to him, because that's the job of a coach. And I would always suggest that to any strength and conditioning coach or any fitness coach or any physiotherapist or any medical doctors who are working with the team, that as much as you might understand the sport, as much as you might know that something is not right or wrong, you don't have the prerequisites like a coach to completely take the ball, the control on your own situation. You can create an environment where coach and the player are part of it, and you also in your own domain of expertise can help them to improvise a technical pattern whatever you want to achieve. So that's how I'll keep it in my experiences. Yeah. Okay. So, like, we are having viewers in our channel who are parents or like growing athletes who wants to Yeah. play. So, what will you like to suggest the upcoming athletes and the parents who wants their childs to play some sport? So yeah, so I will start that if you're a parent who wants your child to take up a sport, or if you are a parent whose child is playing a sport, I would suggest you that sport is the best gift you can give it to your child for the rest of the life. And the outreach of sport is far more bigger than just creating a champion or just winning a championship. तो अगर आपका बच्चा प्रोफेशनल लेवल में खेल पाया तो बहुत अच्छी बात है, पर नहीं भी तो सब कुछ लाइफ के क्वालिटीज इतना स्ट्रांगली उस बच्चे में फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड डिसिप्लिन पैरामीटर्स जो सेटअप हो जाएगा, वो अपने लाइफ में अनपैरेलल रहेगा. तो हार को एक्सेप्ट करना, जीत को ग्रेसफुली देखना, हार के भी अगले दिन आके वापस ट्रेन करना, ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है, आपके बच्चों में डेवलप करता है, जो कि उसको लाइफ के बड़े चैलेंजेस को फेस करने में हेल्प करेगा. नंबर 2 फैक्टर, अभी फिजिकल पैरामीटर्स इतना वीक होते जा रहा है हमारे बच्चों का. इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. हाइपरटेंशन बहुत कॉमन है. तो ये जितना मेडिकल सिचुएशंस आ रहा है क्योंकि बच्चे फिजिकली फिट नहीं है अपने शुरुआती ईयर्स में, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है कि इफ वी इंट्रोड्यूस स्पोर्ट्स एंड फिजिकल लिटरेसी अर्ली इन देयर लाइफ, that means they can continue to have far more fruitful life for the rest of their life without probably getting into a medical problems or situations. And third thing, most importantly, if you want the child to play, if I can suggest you one thing, okay, please, only one thing, if you can keep telling your child in between whenever possible that I am extremely proud of what you are doing and I'm very happy to see you play. तो जीतने हारने में दुख आपको भी होगा, आपको भी फ्रस्ट्रेशन आता है, आपको भी गुस्सा आता है, बट बच्चे पे वो चीज प्रेशर मत डालिए. अगर आप बीच बीच में सिर्फ ये बात बोल सकते हैं उनको जब जब मौका मिले कि आपको खेलते हुए देखने से मेरे को बहुत गर्व महसूस होता है और बहुत खुशी महसूस होती है, तो उससे बड़ा एनकरेजमेंट एक बच्चे को और कुछ नहीं मिलता. वैसा एनकरेजमेंट बच्चे को और अच्छा बनने में हेल्प करता है. अब ये है पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू. एथलीट के जो बडिंग एथलीट्स है जो आगे प्रोफेशनल लेवल में खेलना चाहते हैं, सबसे बड़ा फैक्टर है हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क. टैलेंट एक स्टेज तक काम करता है, बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम टैलेंट इज टू ओवररेटेड. एक स्टेज आने के बाद टैलेंट सबके पास बराबर हो जाता है. So it's only your discipline, it's only your dedication, it's only your work ethic of continuing to become more and more stronger and better. और हार्ड वर्क करने से ही ये प्रिंसिपल्स आपके लाइफ में आ सकता है. नंबर 2 थिंग्स, नेवर लुक इनटू शॉर्टकट्स. सो किसी भी तरीके से शॉर्टकट मत अपनाइए. एक्सीलेंस को पाने के लिए या एक अच्छा एथलीट बनने के लिए आपको सालों लगता है. सो डोंट गो फॉर थिंग्स लाइक डोपिंग, don't get into trap of corruption, don't get into trap of age frauding. All of that will not give you long term dividends. So लंबा सोचिए, बड़ा सोचिए और मेहनत करने से मत पीछे हटिए. और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि हार से मत डरिए. ओके, आप हार सकते हैं बट हारते 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 भी अगर आप मेहनत करते जाएंगे तो वन फाइन डे योर टाइम विल कम. सो डोंट गिव इट अप टू सून. बहुत समय लग जाता है अपने आप को उस लेवल में पहुंचाने के लिए. सो प्लीज कीप वर्किंग एंड डोंट बिकम टू हार्ड ऑन योरसेल्फ. तो अगर आप दिन रात प्रैक्टिस कर रहे हो और आप सोचते हैं कि मैच में जाके सब कुछ वैसा हो, तो कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता. सो डोंट बिकम टू हार्ड. एंजॉय द गुड साइड ऑफ द स्पोर्ट. आप ये अपने आप को याद रखिए कि आपने वो क्रिकेट खेलना
या बैडमिंटन खेलना या फुटबॉल खेलना क्यों शुरू किया था, वो चीज आपको खुशी देती थी। तो डोंट रॉब दैट फैक्टर अवे फ्रॉम योरसेल्फ, अपने आप से उस चीज को दूर मत करने दीजिए। एंजॉयमेंट, खुशी का माहौल, वो टीम के साथ मिलना जुलना, उनके साथ खेलना, वो सब फैक्टर को अपने अंदर बना के रखिए, दैट विल गिव यू लॉन्ग टर्म एज। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट्स गुड टू फॉलो योर आइडल्स इन सोशल मीडिया, बट उनका ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स, उनका डाइट प्रोटोकॉल्स इमीडिएटली उनको देख के कल वैसा करने के लिए मत सोचिए। तो अगर एक कोई सीनियर एथलीट है, कोई सीनियर क्रिकेटर है जो पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज कर रहे हैं या एक पर्टिकुलर तरह का ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आप उस चीज को समझिए कि उनको वो चीज करने के लिए 10 साल या शायद उससे भी ज्यादा समय लग पाया है। सो डोंट बिकम टू एम्बिशियस इनफ एंड स्टार्ट डूइंग इट नेक्स्ट मॉर्निंग, बिकॉज उससे आपको इंजरीज भी हो सकता है, उसका नेगेटिव एंड हार्मफुल इफेक्ट्स भी हो सकता है। All right. And last and most important thing, please stay away from things like banned substances. Doping se dur rahiye. That can kill your career completely. And I would suggest that keep working hard, guys. Enjoy the good time. Have fun and take good care of yourself. That's the only thing which I can tell an athlete. And enjoy the sport. That's the best thing can ever happen to your life. Yeah. Okay, so now like we are done. So thank you so much कि आपने time दिया and we are having great sessions and like now I hope those people who are like waiting for the videos and like who wants inspiration they get from this video. So thank you so much, sir. It's my pleasure. Thank you so much. I wish you, your channel, the best of luck, and all the people who are listening to it, good wishes to them. Take good care of yourself. Good care of yourself. All the best. Take care, sir. Bye. Bye, sir. So guys, if you find this video helpful for you, please subscribe to the channel, press the bell icon and share with your friends. And we're if you have some queries or doubts, comment down how would you like the video, how you want the videos to be next video, because we want suggestion from you. So thank you so much for watching and thank you.